Hello guys, I am Shubham for tutorials. In this video, we are talking about tryptophan operon. Okay, in the previous video, we saw about lac operon. So let's get started with the video. Tryptophan operon में basically first important point is that it is a repressible operon. Repressible operon, and second is anabolism होता है इससे. Anabolism means synthesis. Okay, repressible operon means इसे चाहिए repressor, right? Repressor. And एनाबॉलिज्म मीन सिंथेसिस है. सिंथेसिस किसकी करनी है? ट्रिप्टोफैन की. ओके, सो यहाँ पे लॉजिक है बेसिकली. सी फ्रॉम दिस 2 points ओनली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ओपेरॉन बेसिकली वर्किंग. सो एनाबॉलिज्म है मतलब ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करनी है, राइट? सो ट्रिप्टोफैन जब हाई होगा तभी ये ओपेरॉन होगा ऑफ, राइट? बिकॉज ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो प्रोडक्शन की क्या जरूरत है, राइट? इफ द अमाउंट इज हाई then there is no need for synthesis. So when tryptophan is high, operon will be off. और इसका उल्टा, जब ट्रिप्टोफैन होगा लो, ओपेरॉन होगा ऑन, बिकॉज हमें चाहिए ट्रिप्टोफैन, तो सिंथेसिस होगी स्टार्ट, राइट? सो दिस टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग द ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन. ओके, तो यहाँ पे रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन ही है. ओके, गॉट इट? लैक ओपेरॉन थिंग, लैक्टोज वाज अ इंड्यूसर बिकॉज वो एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन, राइट? ये रिप्रेसिबल है, तो इसमें ट्रिप्टोफैन इज अ रिप्रेसर बिकॉज हियर इट इज रिलेटेड टू एनाबॉलिज्म सिंथेसिस. वहाँ पे लैक्टोज का ब्रेकडाउन करना था, राइट? सो लेट्स सी द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन. 5 जीन्स है, 5 जीन्स. ओके, 5 जीन्स आर देयर, राइट? देन यहाँ पे एक लीडर सीक्वेंस है, लीडर. उसके पहले यहाँ पे ऑपरेटर, प्रमोटर एंड रिप्रेसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बेसिक वर्किंग, मतलब कैसी वर्किंग है. जब ट्रिप्टोफैन हाई है, हाई ट्रिप्टोफैन, ओके, व्हेन द ट्रिप्टोफैन इज हाई, सो रिप्रेसर रीजन से एक रिप्रेसर कोड करेगा एंड ट्रिप्टोफैन आई विल शो बाय दिस कलर, जो इसके साथ बाइंड होगा, राइट? एंड विल गो टू द ऑपरेटर साइड. It will go to the operator side, no transcription and translation will be seen. मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे. ओपेरॉन विल बी ऑफ हियर, नो प्रोडक्ट्स फॉर्म, राइट? गॉट इट? जब ट्रिप्टोफैन हाई है, ऑलरेडी प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन, तो क्यों चाहिए, क्यों सिंथेसिस करनी है? सो ऑफ होगा ओपेरॉन. ओके, द नेक्स्ट ऑपोजिट थिंग, when tryptophan is low, when tryptophan is low, at that time tryptophan cannot bind to repressor.
मतलब ऑलरेडी एक रिप्रेसर है, उसके साथ ट्रिप्टोफैन बाइंड होगा. So this will be like a co-repressor. Okay, I will mention here this thing. The tryptophan है, that will be a co-repressor, right? Co-repressor. So here tryptophan cannot bind to repressor and transcription and translation starts. In this case, what will happen? Operon will be on, right? This case, operon on. And when operon is on, products will be formed, right? Let's see the pathway now. Basically, ये pathway है. This is the pathway of tryptophan synthesis. First, जो initial product है, initial product, that is chorismate, okay, or we can say chorismic acid, final tryptophan, okay. So यहाँ पे enzymes है, right? pathway है तो enzymes होंगे. First enzyme anthranilate synthase coded by tryptophan E. Next enzyme anthranilate phosphoribosyl transferase tryptophan D. Next enzyme, ये दोनों एंजाइम, ओके, फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रेनालेट आइसोमरेज एंड इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेस कोडेड बाय ट्रिप्टोफैन सी, राइट? जो जीन्स देखे हमने 5 जीन्स, वो जीन्स कौन कौन से एंजाइम्स बनाते हैं. नेक्स्ट एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेस अल्फा सब यूनिट ट्रिप ए एंड ट्रिप्टोफैन सिंथेस बीटा सब यूनिट ट्रिप बी. Okay, so all the genes code for this particular enzymes. Got it? ये हुआ जीन्स का. रिप्रेसर का हमने देख लिया. अभी हम जाएंगे लीडर सीक्वेंस. ओके, सी दिस लीडर सीक्वेंस. Leader sequence is very important for regulation. Okay, now we will talk about regulation, very important. First of all, regulation दो चीजों से होता है. फर्स्ट इज रिप्रेशन, सेकेंड इज एटेन्यूएशन. वी सॉ अबाउट रिप्रेशन, ट्रिप्टोफैन जब हाई होगा तभी रिप्रेशन होगा, एंड व्हेन लो होगा तभी ओपेरॉन विल बी ऑन. एटेन्यूएशन एक नेक्स्ट लेवल की चीज है, राइट? एटेन्यूएशन इज प्रीमेच्योर टर्मिनेशन. प्रीमेच्योर टर्मिनेशन एंड एटेन्यूएशन में लीडर सीक्वेंस का रोल है. ओके, नाउ लेट्स सी द लीडर साइट. ये लीडर साइट है. लीडर साइट से एमआरएनए बनेगा, लीडर एमआरएनए, राइट? आई विल इरेज दिस. आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन लीडर एमआरएनए है, एंड इसका होगा ट्रांसलेशन तो प्रोटीन. ओके, लीडर प्रोटीन और वी कैन से पेप्टाइड. बेटर टू राइट पेप्टाइड. And this is of 14 amino acids. We have to know this. 14 amino acids का है पेप्टाइड, एंड इसमें ही होता है एटोनेटर सीक्वेंस. आई विल हाईलाइट दैट विथ अ डिफरेंट कलर. एटेन्यूएटर. ओके, so what I mentioned, leader sequence 14 amino acid,
contains attenuator. Okay, and in this amino acid there are two tryptophan amino acids also. Got it? Two tryptophan amino acids are also there. So there are, I will draw here four sites. Okay, this is about tryptophan leader mRNA. mRNA की बात चल रही है यहाँ पे लीडर सीक्वेंस. तो फोर साइट्स है. This first site will bind pair with second. Okay, complementary pairing. Complementary to each other. एक दूसरे से ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग शो करते हैं. सो वन विल पेयर विथ टू, टू विल पेयर विथ थ्री, थ्री विल पेयर विथ फोर. Got it? Now the first case, when tryptophan is high or abundant. ओके, जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है क्या होगा? ओपेरॉन ऑफ होगा बिकॉज सिंथेसिस की कोई जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन अबंडेंट है तो 3 एंड 4 के बीच में पेयरिंग होती है. ओके, 3 एंड 4 के बीच में, राइट? दिस इज अ साइन फॉर टर्मिनेशन. Termination means operon will be off. Okay, when 3 and 4 are paired to each other. Got it? In the case tryptophan high होगा. Second condition, when tryptophan is low. tryptophan low है. At that time क्या होगा? Operon on होना चाहिए, right? Operon will be on because तभी synthesis करनी है. So I will first write here operon will be on here. And यहाँ पे फिर 2 and 3 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है. 2 and 3 के बीच में. So this will be like operon on. And the third condition is like no protein synthesis. मतलब synthesis करनी नहीं है. At that time, 1, 2, 3 and 4 complementary pairing करेंगे. Got it? These are the three things we have to understand. Tryptophan high, operon will be off. Tryptophan low, operon will be on. And यहाँ पे no protein synthesis. तो tryptophan का ये जो regulation है, this is very important part. Okay. So this is all about tryptophan operon. That's it for this video. I hope this video is helpful. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Share this video with your friend. Subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.